अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं स्टूडेंट्स? फर्स्टली वालेकुम अस्सलाम, आप लोग ऐसे करो जाकर यूट्यूब से ज्वाइन कर लो, और सेकेंडली यू आर सीइंग माय स्क्रीन. So firstly we will talk about previous lecture, and then we will go for the next lecture, which is about interview, famous interview questions, and which is about the pronunciation mistakes you people are doing in your conversation or your conversational English. So, firstly, we will talk about the last lecture. Okay, there was a lecture about on self-introduction. We will talk about self-introduction, or how to introduce yourself at anywhere, at any place, or in which words, which phrases can use for introduction. All right. Firstly, where we have to introduce ourselves. Yeah, ourselves, where we have to introduce ourselves. In your class, maybe at the job interview, maybe at some new job, or on the new hobby, at some large event in front of someone. So self-introduction is something more than important. It usually tells other who are you, or who exactly are you. आप कौन हैं, ठीक है? And then we talked about greetings. We studied these in detail, that where we have to use this or where we have to use that. There are a few famous greetings like hello, good morning, good afternoon, good evening, good day, and good night. Okay, so these all are the formal ones. For example, these greetings are also known as conversation starters. इनसे आप कोई भी conversation start कर सकते हैं. And this phrase is something you have to use to end your conversation. All right. And then we talked about informal ones. These are hi, hey, what's up, hey, what's good. And these all are informal, which simply means that we are not supposed to use in these greetings in our professional setting. Then we talked about how we have to tell someone about our name. All right. So how we have to tell someone about our name? It's I am, I'm, my name is, my name's, and this is. All right. Then we talk about geographical location, from where you belong, and from where you or where you are living, and what is your nationality. And you have to tell in these phrases. You can use these phrases to tell about your geographical location. All right, then we talk about position. Usually, the point I told you, you're not supposed to introduce your position at very first, until and unless you are CEO or COO, or can say managing director somewhere. Then we talk about qualification, and this is the most important one, that I am about to graduate in. If you are about to graduate, आपकी डिग्री पूरी होने वाली है, you will say I am about to graduate in your subject. I am a subject graduate. All right, अगर आपकी डिग्री पूरी हो चुकी है, or I have a bachelor's degree in, or if you are MPhil, you can say that I am subject postgrad. And then we talk about difference between theoretical and practical subject, and we talk about courses. So if you are taking some theoretical subject, or you are reading some theoretical subject, or you are taking course in some theoretical subject, what you will say? You will say, I'm currently taking course in English. All right. And if you are working on some practical subject like graphic designing, or you can say fashion designing, what you will say, I'm currently taking course on graphic designing. In and on, there is a difference between theoretical and practical subject. Then what you will say, I have completed a course for the theoretical subject, or on for a practical one.
All right, and then you will tell about the time, or you can say you can replace this word time. This is not compulsory. You can say simply, I have completed a course on graphic designing. I have completed a course in English language. All right. So then we talk about experience. And what you have to use, or which line you have to use, or which phrase you have to use, that is, I have number of year experience, and then your occupation in field. For example, what I would say, I have 5-year experience in field of content writing. And then we talked about family. I'm from the family of 7 or 8. Yeah, we are family of 6. सही. आपने ये नहीं कहना कि you are from, yeah, your family have 7 people. No, you are not supposed to say this. You have to use these 2 phrases, or maybe more than these 2, that I'm from family of 7 or 8, or we are family of 6. And then we have to talk about hobbies. If someone asked you, or will ask you, you have to introduce yourself in 2 minutes, and then you have to use few fillers which can be make your conversation more interesting, or we can say that more to cover that time which is given to us. For example, you can say that I really like, I really enjoy, I'm big fan of, I am keen. You are keen means you are expert in something. Then you talk about age. I am number of years old. I am 23 years old. If you don't want to tell them about your age, you can say that I am in my early 20s. मतलब आप 21, 22 या 23 साल के हैं. And then you can say that I am a mid of my 20s. Means आप 24, 25, 26, 23 साल के हैं. Or you can say I am in my late 20s. ठीक है. Your homework was, you have to make a video of self-introduction. Some of you shared that video with me and with Dr. Imsha as well. So there are so many mistakes, although your efforts are really, really good. But there are there are a few things I want to mention here. Firstly, you are not supposed to speak everything at very first in correct manner. All right. I am not demanding you to give me a perfect video. All right. So what was the second thing? Second thing was your speed. In English, what is basic mistake? We used to talk very fastly in Urdu or in Punjabi, as these are our native languages, or we are used to speak those languages. So we are not supposed to talk in some foreign language with that speed. You have to be clear, you have to be slow, you have to change your pitch. Means it's not like reading some sabak. ठीक है, ये बिल्कुल नहीं है कि आपने कोई सबक पढ़ना है. If your pronunciation is wrong, I am okay with that. People are okay with that. What actually is your passion, your efforts, and your capability to adopt things. How you can adopt those things. I gave you a set pattern to introduce yourself. I'm sorry to say there was lack of creativity. Some of you tried to, add few things, but others are like, कि बस दे दिया है, or we have to talk about this. So this is really not good attitude. I will see
and we'll try to give you individual feedback in your groups. But what you have to do, you have to put more efforts. There is no need to panic about when 6 years back, when I took admission in English language and literature, I was unable to speak in English language for 3 months. All right, I was unable to speak in इंग्लिश लैंग्वेज फॉर 3 minutes. प्रेजेंटेशन हमारी जान पे भारी होती थी, हमने प्रेजेंटेशन कैसे देनी है. वॉट वी विल डू दैन, हम रट्टा लगाते थे उसका, ठीक है, उसके बाद उसे कन्वर्सेशनल स्टाइल में ले आते थे. राइट, जब आहिस्ता आहिस्ता आप चीज़ों को सीखते हो तो आपको वो आ जाती हैं. सो देयर इज़ नो नीड टू बी पैनिक अबाउट, and you have to manage things more clearly and more concisely, and you have to talk about your goals, your dreams in English language, what you want to achieve. English is really not difficult. If I'm able to speak, you are all are far more intelligent than me, and you can easily speak this language. So before starting our topic, I will talk about check your questions and try to answer those. And you people have to submit your homework as well. ओके, अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर लिया हो तो उस लास्ट लेक्चर में हमने सारा कुछ उर्दू में पढ़ा था, ठीक है. स्क्रीन मैंने बंद कर दी है, स्क्रीन इस वक्त शेयर नहीं हो रही. विच होमवर्क, अगर आपने लास्ट लेक्चर लिया हो तो आपको पता होगा कि कौन सा होमवर्क आपने करना था, ठीक है. और इस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया है कि आपने कौन सा होमवर्क करना है. उर्दू में अपना इंट्रोडक्शन मैं दे देती हूँ. ये है कि आप लोग कोशिश करो इंग्लिश को भी समझने की. कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो आई विल एक्सप्लेन दैट इन उर्दू एज वेल. तो उर्दू में इंट्रोडक्शन करा देती हूँ मैं अपना. देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट इट. उर्दू में वैसे आपको इंट्रोडक्शन प्रोफेशनल जगहों पे करवाने की ज़रूरत पेश नहीं आती अनटिल एंड अनलेस आप उर्दू की किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, ठीक है. कोई भी लैंग्वेज हो उसमें इंट्रोडक्शन कराने के सेम असूल होते हैं. इफ़ यू आर इन पाकिस्तान यू विल गो एंड टॉक अबाउट अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ये है और मैंने इस चीज़ में तालीम हासिल की हुई है. इफ़ आई विल टॉक अबाउट माई इंट्रोडक्शन, व्हाट आई वुड से मेरा नाम कुरतुल्लान है, मैं फैसलाबाद से हूँ. मेरी ग्रेजुएशन की डिग्री जो है वो अंग्रेज़ी अदब और ज़ुबान में है, और मेरी एमफ़िल की डिग्री है, या मैंने अंग्रेज़ी लसानियात में एमफ़िल किया हुआ है, ठीक है. और मैं अपनी अगर वर्क के बारे में बात करूँ तो मैं एज़ कंटेंट राइटर वर्क करती हूँ, और इसके अलावा क्या कह सकते हैं कि मैं एक शायरा हूँ, मैं एक कालम निगार हूँ और मैं एक तनकीद निगार हूँ, ठीक है. अब अपनी वर्क स्पेशलिटीज़ बताते हूँ. और सेम इंट्रोडक्शन, इफ़ वी विल स्विच टू इंग्लिश, व्हाट आई विल से, आई एम कुरत, आई एम बिलोंग्स टू फैसलाबाद. I have done my graduation in English language and literature, and I have done my master's in applied linguistics, and I'm a writer, critic, and a poet, and I'm working as content writing professional from 5 years. Simply, this is so much simple and easy. All right, so this is not a previous lecture. I'm just giving you a brief, you can say brief summary of your lecture. All right. अब आप लोग ऐसा करें कि आई विल गिव यू 2 minutes. आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है.
Okay, so we have to turn back to our lecture. For this phase, firstly, I would like to ask all of you to open your notebooks. All right. So we will talk about some basic sounds and some basic mistakes in English language. आज का होमवर्क इसके बाद पता चलेगा ना, क्लास के बाद. ओके, सो इंग्लिश में कोई इतनी मुश्किल की बात नहीं है. देयर आर 4 वर्ड्स, 4 लफ्ज़ हैं, ठीक है. एंड यू हैव टू ऐड एच साउंड विद दोज वर्ड्स. एच जो लफ्ज़ है, इसका साउंड आपने उनके साथ ऐड करना है. और आप जब उनके साथ ऐड करने के लिए हैबिचुअल हो जाओगे, आप आदत डाल लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना मतलब आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपका लहजा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, ठीक है. फर्स्ट वर्ड इज़ टी. लफ्ज़ टी जिसे हम कहते हैं, टी, इसके साथ आपने एच साउंड ऐड करना है. फॉर एग्जाम्पल, टाइम, टुगेदर, टुमारो, ठीक है. एंड व्हेन वी विल टॉक अबाउट द अदर वर्ड, दैट इज सी के साथ आपने एच साउंड ऐड करना है. और ये साउंड्स आपने कहाँ ऐड करने हैं? अगर कोई एक लफ्ज़ पहले हो, ठीक है, और एक लफ्ज़ किसी ये जो अल्फ़ाबेट है, ये किसी लफ्ज़ के पहले हो, किसी लफ्ज़ के दरमियान में हो, तब आपने इसके साथ एच साउंड ऐड करना है. फॉर एग्जांपल, कैट, क्लॉक, ठीक है. और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज़ पी. जिसे हम पी कहते हैं, दैट्स पी. परफेक्ट, एच ऐड किया हमने, परफेक्ट. और मोस्टली कोई ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जिनमें ऑलरेडी एच साउंड आगे ऐड हो. फॉर एग्जांपल, फ्रेज, ठीक है. एंड देन वी विल टॉक अबाउट आवर लास्ट वर्ड, दैट इज के. किंग and something else. Is there any other word with K? If students, you're actively listening, so you can suggest me some words starting with K. First one is king. Okay. Then key, keep, keen, kick off, kid, and then I think these are enough. King, keen, keep, key, kick, kick off, and kid. All right. Kangaroo, yeah. Kite. That's nice. So it's Basant season, so you people are totally thinking about kites. All right, so just give me 1 minute and I'll back with new lecture. Okay. So we are gonna, yeah, that's kilogram. It's not a complete word. We have to talk about a kilogram, which is the complete word. Okay, so our next lecture is about interview and tips, tricks and strategies. How you have to give some interviews. आप लोग जो हैं वो graduate हो चुके हैं या graduate होने वाले हैं. So what you have to do, you have to focus on few things. Very first question हमने attempt कर लिया. That is बेटा नॉलेज में के साइलेंट आता है. किंग, वी ऑलरेडी गेव द एग्जांपल ऑफ किंग. नॉलेज में के साइलेंट है, ठीक है.
सो ये एन से स्टार्ट होता है. Okay, so our next lecture is about interview questions. For the very first one is introduce yourself. All right, we have covered with your very first question. That was is tell me about yourself. Uh, Usually, this is always the very first question, and we can say that this is used to warm up a candidate. And फॉर एग्जाम्पल अगर आपके मैनेजर ने या किसी पर्सन ने आपकी सीवी नहीं पढ़ी हुई तो वो आपको क्या करेगा विजुअल कंटेंट बेटा आपने कौन सा लेना है यू विल simply go to this video on your YouTube channel. So इसके अलावा क्या विजुअल कंटेंट चाहिए आपको ओके सो वो आपसे एक क्वेश्चन क्यों पूछेंगे यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सिंपली इफ अगर उसने आपकी सीवी नहीं पढ़ी होगी और यूजुअली आपको वो फंसाने की कोशिश करेगा इस क्वेश्चन में और आपसे पूछेगा कि आपने अपनी जॉब एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ा है या नहीं उसके बाद ही देयर इज अ सेकंड मोस्ट फेमस क्वेश्चन और द मोस्ट यू कैन से asked question is what attracts you to our company it's the most important question अब वो क्या कहते हैं इसमें वो क्यों आपसे बात कि ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछते हैं फर्स्टली वो ये देखना चाहते हैं कि क्या प्रायर टू इंटरव्यू से पहले आपने अपनी जॉब के बारे में पढ़ा है या आपने उस कंपनी जिसमें आप काम करने जा रहे हो क्या उसके बारे में आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा ठीक है ओके सो आपको क्या करना चाहिए what you have to do you have to simply firstly check that company on Google their website their social media pages and there you completely and easily get the vision and the mission statement of that company and that would be a good thing for you to know about your company or your job. Actually, it's a little bit difficult for me to speak today. I just went through two dental surgeries in past week. That's why. So just bear with it. Okay. So usually they will ask you why you wanna join this company. All right. अब आप उन्हें क्या बताओगे? You have to relate this question with your job you are interviewing for. ठीक है आपका जिस चीज़ के लिए इंटरव्यू हो रहा है आपने उसके साथ उसे रिलेट करना है कि मेरी ये वाली फलां जो स्किल है उसे ये इन्हांस करेंगी ठीक है टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ ओके दैट्स really you can say famous and the tricky question as well अब आपकी स्ट्रेंथ क्या है अपनी तारीफ करना इज़ रियली डिफ़िकल्ट अब आपने अपनी तारीफ किस तरह की करनी है आप क्या करोगे आप उन्हें कंक्रीट एग्जांपल्स दोगे ठीक है ऐसे एग्जांपल्स
जो कि आपकी उस जॉब से रिलेट करती हों या जो आपकी प्रोफ़ेशनल सक्सेस के बारे में बात करती हों। For example, you can say that my strength is that I am a keen worker. मतलब मैं हर छोटी से छोटी डिटेल को अपने ध्यान में रखता हूँ। अब आपने अगर तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक ऐसी जॉब मिल रही है जो कि मैनेजर की है, तो आप क्या कहोगे? अपनी स्ट्रेंथ क्या बताओगे? आई एम एन एक्टिव टीम वर्कर, ठीक है? मैं एक अच्छा टीम वर्कर हूँ, उससे क्या पता चलेगा कि यू आर गुड एट टीम वर्क व्हिच इज़ रियली good in your job, and that one is related to your job description as well. Then we will talk about next question, that is what are your weaknesses. अब आपने पहली चीज़ बतानी है कि what are your weaknesses. आपने वो अपनी weakness ऐसे तरीके में बतानी है कि उसे लगे कि ये आपकी जो है ये पॉजिटिव वीकनेस है और ये वीकनेस आपकी जो है आपको हाँ, मोर स्ट्रेंथन करती है आपकी सीवी को, आपकी उसके लिए पोजीशन को जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है। फॉर एग्जांपल यू विल से आई एम अ परफेक्शनिस्ट। This will add a positive impact to your interview. All right? And why this will be the good one? Because a perfectionist is a person who used to work perfectly on every aspect of that task. ठीक है? वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 इयर्स? अब यूजुअली क्या है, ये आपसे क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है कि क्या आप कंपनी छोड़ के आगे जाना चाहते हैं? फिर आप कहें जी मैं फ्यूचर में मोर आपके साथ काम करूँगा, मुझे मोर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, फिर मैं आगे चला जाऊँगा। दैट्स रियली रॉन्ग। यू आर नॉट सपोज्ड टू डू दिस। यू कैन से दैट कि आप लोग जो हैं बेटा, आप उसे ये करें कि आप ये कह सकते हैं मदीहा मैं क्वेश्चंस की स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है? आई एम जस्ट टेकिंग अ लिटिल बिट गैप्स. I already told you about that. I went through 2 dental surgeries in past week. That why I am little unable to speak clearly. That's why I'm taking little pauses. So, where do you see yourself in 5 years? अब आपने क्या आप कह सकते हो, अब वो देखना चाहता है how much you are goal oriented or how much you are interested about his company's success. और वो ये चेक करना चाहता है कि आप रियलिस्ट हैं या नहीं हैं। पैनिक ना किया करें। मुझे पता है कि मैंने एक आपकी चीज़ कवर करानी है, तो मैं कवर कराऊँगी उसे। और आपकी इंडस्ट्री अवेयरनेस के बारे में बात करेगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि एक लम्हे आप स्टार्टर हैं और अगले ही साल आप बिल गेट्स बन जाएँगे। दैट्स रियली रॉन्ग। सो आपकी एक्सपेक्टेशंस वो चेक करता है। Can you tell me about a time where you were encountered a business challenge? How did you overcome it? अब ये क्या है, ये साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल क्वेश्चन है कि आपकी अब आपने अपना इसे किस तरह से डील करना है। इसके लिए हम कहते हैं देयर इज़ अ CAR मेथड, CAR मेथड, व्हिच C stands for context, A stands for action, and R stands for result. फॉर एग्जाम्पल आप क्या करोगे, कॉन्टेक्स्ट चेक करोगे कि प्रॉब्लम क्रिएट कैसे हुई, ठीक है? अब उसने आपको कहा, अब आपने उसे एक ऐसा आंसर करना है कि देयर वाज अ प्रॉब्लम। अब आपने उस प्रॉब्लम का कॉन्टेक्स्ट चेक किया, ठीक है? उस कॉन्टेक्स्ट चेकिंग में आपने क्या किया, उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस देखे और जो आपको बेस्ट सॉल्यूशन मिला आपने उसे इम्प्लीमेंट किया। उसे इम्प्लीमेंट करने के बाद उसके क्या रिजल्ट्स आए, ठीक है? अब उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। व्हाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स यू आर लुकिंग फॉर इन योर नेक्स्ट रोल? अब आप वो पूछेगा कि आपका जो नेक्स्ट रोल है उसमें आप क्या चाहते हैं कि क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं या आपको क्या-क्या काम अच्छे तरीके से
करने पड़ेंगे। अब आप क्या कहते हो, आप अपने उस रोल से रेलेवेंट अपनी स्किल निकालते हो और आप उस स्किल के बारे में बात करते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम गुड एट टीम मैनेजमेंट। अगर आपने कहीं मैनेजर लगना है, ठीक है? और आप उस स्किल को आप जिस जगह पे आप जॉब करने लगे हो उसके साथ एक्सप्लेन रिलेट करोगे। Why you are leaving your current job? अब this is something they want to know about your personality, ठीक है? अब आपने क्या करना है, दिस इज़ अ क्रिटिकल क्वेश्चन। तो अब आपने इस क्वेश्चन को फ्रेम करना है इन सम पॉजिटिव एस्पेक्ट। अब आप ये ना कहें कि आपकी जॉब बुरी है, आपकी आपका जो एम्प्लॉयर है, आपका बॉस है वो बुरा है, आपके कोवर्कर बुरे हैं। जितना मर्ज़ी आपका दिल चाहे कि आपने उस जॉब को छोड़ना है, ठीक है? अब आप क्या कह सकते हो कि आप यू व्हाट यू कैन आंसर। For example, someone will ask you, "Why are you leaving your current job?" What you can answer? You can say that, although my current job is really good, the co-workers are amazing. I always enjoy work with them, but my career needs to work with a big firm like you." सही। और आप अपने बताओ कि दिस वर्किंग विद योर फर्म will add valuable experience in my resume or in my CV, and I'm really excited about new challenges, new about this opportunity, and this will really good for me if I will get this job, etc etc। ठीक है, आप कभी भी नेगेटिव कमेंट नहीं दोगे। अब आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी, बिफोर हैंड रिसर्च करें। अगर आप बिगनर हैं तो आप सर्च करें कि मार्केट में बिगनर की सैलरी क्या है और उसके बाद एक्सपर्ट की सैलरी क्या है, और उसके बाद उसके मिडिल की दरमियान की वैल्यू निकाल के आप उन्हें दे दें। आपको उससे 8 से 10,000 वो कम ही ऑफर करेंगे, ठीक है? अब वो आपसे इंटरव्यू में पूछेगा एट द वेरी एंड, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी? आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दें, ठीक है? अब अगर आपको यहाँ उस कंपनी के या उस रोल के बारे में कोई बात समझ नहीं आई तो आप सिंपली पूछ सकते हैं, ठीक है? अब आप क्या करोगे बेटा, आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उससे पूछ सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पूछ सकते हो कि आपकी प्रमोशन कब तक होगी, ठीक है? नो टॉक अबाउट प्रमोशन एट द वेरी फर्स्ट हैंड। या आप पूछ सकते हो कि आप जब अपना इंटर्नशिप पीरियड पूरा करोगे तो उसके बाद आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, या इज़ देयर एनी अदर फैसिलिटी रिलेटेड टू दिस जॉब। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या आपको घर मिल रहा है बिग स्केल जॉब्स के लिए, या आपको किसी दूसरे शहर में या उनके हेड ऑफिस वगैरह में भेजे जाने के चांसेस हैं या नहीं, ठीक है? लेकिन देयर excuse me please, there is no need to ask same question twice। अब आपका होमवर्क क्या है, आप लोगों ने तीन क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। फर्स्ट वन इज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या मतलब introduce yourself is a question, tell me about yourself is a question, and what are your biggest weaknesses, yeah, what is your biggest weakness and what is your biggest strength। ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने इन्हें पढ़ना है और अच्छे से आंसर तैयार करके मुझे देने हैं, and we will discuss those answers in next class, inshallah, and in next class and next week we will talk about listening, how listening helps in speaking, and how reading helps in speaking, and few misconceptions about English language, and some important phrases you can change your everyday life or your speaking skills, or add credit to your speaking skills. So if there is any question you can simply ask in a comment box or in the chat box you have at StreamYard.
बेटा ज़ूम पे लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। रीज़न क्या है कि ज़ूम जो है वो जस्ट 100 कैंडिडेट्स को 100 बच्चों को सपोर्ट करता है, ठीक है? Questions are first one is introduce yourself, and second one is your biggest weakness, and third one is your biggest strength. Anything else? बेटा आप इसकी वीडियो में भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फर्स्ट वन इज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सेकंड वन इज योर बिगेस्ट वीकनेस एंड थर्ड वन इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। देन आपने देखा होगा बेटा कि आप ये अपनी जॉब से रिलेटेड, मैंने आपको बताया कि आपने उसे अपनी जॉब से रिलेट करना है, तो यू हैव टू रिलेट ईच एंड एवरीथिंग विद योर जॉब, कि आपकी क्या स्किल्स हैं और आपकी जॉब के साथ वो कैसे मैच करती हैं, ठीक है? इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग आई गेस आपको मिल जाएगी। You're welcome. सो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपकी ये एबिलिटी चेक करूँगी मैं कि आप उसे कैसे रिलेट करते हो। जब एक दफ़ा आप लोग उन्हें अटेम्प्ट कर लोगे, वी विल टॉक अबाउट कि उन्हें कैसे बेटर किया जाए, ठीक है? ओके, मैं शेयर कर दूँगी ग्रुप में क्वेश्चंस, कोई मसला नहीं है। Then if something is taking time, so you have to invest your time. If you want to give a good and best interview, you have to invest your time. So you can take your time. You have a whole week, एक पूरा हफ्ता है आपके पास. So you can take your time and complete your questions. अच्छा, अब आप जब स्टूडेंट होते हो ना, हमें अपने 7th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, इंग्लिश फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब उसमें क्या होता था, हम सपोज़ कर लेते थे कि ये एक पोस्ट है, इसके लिए हमने सीवी बनानी है, इसके लिए हमने इंटरव्यू देना है, और उसके हिसाब से जो हमारा फ्यूचर करियर होता था, उस हिसाब से हम उसे एडजस्ट करते थे। और हम उस हिसाब से उसे पढ़ते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यू वांना बी अ डॉक्टर, तो आप वही क्वेश्चन उससे रिलेटेड अपनी रिज़्यूमे या सीवी बनाओगे और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन्स आप तैयार करोगे। आपको पता है कि आपके सब्जेक्ट में या आपके फ्यूचर फील्ड में क्या-क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। यार आप किसी फील्ड में पढ़ रहे हो ना,
हबीबा आप किसी फील्ड में पढ़ रहे हो, अब आपने उस फील्ड को अगर आप पढ़ रहे हो, तो आपने बेटा उस फील्ड को आपने उसमें क्या फ्यूचर में आपने क्या बनना है, ठीक है? तो उस फील्ड से रिलेट करके इनका आंसर करो, ठीक है? Then no, there is no task related to that with sounds. So what you have to do, you have to simply focus on those sounds, and you have to use those sounds in your conversational English. And I would love to share a list of words with you people, so you can practice on those. Or if there will have any difficulty in those with those words or in pronunciation, you can firstly contact with Google. If वहाँ आपको क्वेश्चन नहीं मिलता तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है? हबीबा BS फिजिक्स अगर आपने करना है तो आप देख लो ना, आगे आप रिसर्च किस चीज़ में करोगे, तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन तैयार कर लो। फॉर एग्जांपल अगर आपने टीचर बनना है तो टीचिंग की फील्ड से रिलेटेड तैयार कर लो। आपने किधर रिसर्चर लगना है तो रिसर्च से तैयार कर लो। आपने किस फील्ड में जाना है, आपने थ्योरेटिकल फिजिक्स में जाना है, आपने कंप्यूटेशनल में जाना है, आपने लेज़र में जाना है, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, आपने जिस चीज़ में भी जाना है आप उसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन तैयार कर लो। For example, if you are a scientist, you have to talk about your skills in science. Anything else बच्चों, या अब हम इसे एंड कर दें? हाँ जी, आपने जो भी आंसर देने हैं वो आपकी किसी भी जॉब से रिलेटेड हो सकते हैं, जो भी जॉब आप करना चाहते हो या जिस जॉब के लिए आप सपोज़ कर लो कि आपने उसके इंटरव्यू देना है। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, आप अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है?